Hey guys, welcome back to Coding Bar YouTube channel. From today, we're gonna upload a bunch of video in Java tutorials. So in today, we are discussing about variables in Java. So what is variables? Variables is a container where we store some data or some values. Inside Java, there are two or three variables. Name is local, instance, and studies variable. So if you are new in this channel, please subscribe. So let's start. So दोस्तों आपके पास आपका सिस्टम के अंदर VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो VS कोड इंस्टॉल करके JDK को सेटअप कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए वेरिएबल एंड उसके बाद इसके अंदर inside this variable you can create a Java class file called variable.java. After creating this, here you can see one is package, this is variable, this is folder name, and another is variable, this is class name. So after that, inside this class name, you have to declare the main method, public static void main. So here we first declare a variable. Declare a variable. So first rules is type, data type, and variable name ag, and उसके बाद सेमीकोलन. से यहाँ पे देख सकते हो int is a data type and age is a variable name. This is the declaration part, and after this that initialization part, initialization variable का rules क्या होता है? Variable name equal to values. So you can see age is a variable name equal to, and this is a value, and after that we put semicolon. So after that we print this age. So after hit the run button, you can see the age is printed. Okay, variable declaration part, and this is the initialization part. So after that हम लोग सीखने वाला है वेरिएबल का टाइप कितना होता है. सो फर्स्ट वेरिएबल का टाइप होता है लोकल वेरिएबल, which is declared only inside the method, not outside the method. Okay, so local variable कैसे इंसर्ट किया था? int a age equal to 21. So this is the local variable, and after that we declare a static variable. So for declaring a static variable, we declare inside the class, not the method. Okay, so declare the static variables, static variable. So declare करने के दोस्तों आपको पहले static कीवर्ड लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का टाइप दे दीजिए स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रोहित. So this is the initialization part of static variable. You can access the static variable inside this main method. Okay, so just type SOUT and hit the tab button, automatically it fill up. So we print this name inside the main method. So you can see we access this variable inside this method. So when you declare a static variable, you don't create any other instance or any other object of a class. So you can see we can print this variable which is declared outside this method, but we print inside this method. So hit the run button, and here you can see the name Rohit is printed. Name is Rohit. Okay.
सो आफ्टर दैट और एक वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एंड इनिशियलाइज करेंगे। तो पहले डेटा टाइप लॉन्ग एंड उसके बाद वेरिएबल नेम, दिस इज फोन नंबर, एंड उसके बाद इसको इधर डिक्लेयर करेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग इस वेरिएबल को मेथड के अंदर एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, ऐसे ही नहीं आप एक्सेस कर पाओगे। देखिए दोस्तों इधर नहीं आ रहा है, तो इसके एक्सेस करने के लिए आपको क्लास वेरिएबल जो क्लास नेम है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, so variable name, the class name, and then reference, object reference, and then new keyword, and then constructor. So when you create a variable, when you create a object, this constructor is automatically called. Okay, so after that we access this instance variable. We gonna have help of this object reference. So now we write the object and phone. After that we initialize the phone number. And after that you have to write the L name. So when you declare a variable type is long, after the declaration we put this value. So उसके बाद नंबर के पीछे आपको L लगाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस वेरिएबल को प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा। Simply just hit the write the SAUT and hit the tab button. Automatically it's fill up. And after that we want to print this instance variable obj.phone. Okay, and together we also print this local variable. So okay, all completed. After completing this declaration part, static variable, instance variable, and local variable, hit the run button. So okay, we write down this. This is local variable. Local variable. Okay, age, and this is static variable name, and this is instance variable phone. Okay, after that hit the run button. So here you can see the all local variable is printed, static variable and instance variable all are printed. So this is the total type of variable, and आप लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो रूल्स वगैरह है उसको देखने के लिए नीचे एक वेबसाइट का लिंक है, वो आप पढ़ सकते हो। नहीं तो फिर आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको 3-4 रूल फॉलो करना पड़ता है। पहला होता है केस सेंसिटिव, SITIV। जैसे वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो दोस्तों, आप सिंपली जैसे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ x इक्वल टू 5 एंड इन कैपिटल X इक्वल टू, मैं जो देख रहा हूँ ये दो वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। और आप नंबर 2 है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप अंडरस्कोर, डॉलर, नंबर, अल्फाबेट वगैरह दे सकते हो। कॉन्टेंट्स अल्फाबेट, नंबर, अंडरस्कोर and $sign. So you declare a variable where include this alphabet, number, underscore and $sign.
So room, font, alphabet, and underscore. Okay, we declare this variable. बट दोस्तों आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले आप नंबर नहीं दे सकते, जैसे डोंट यूज नंबर टू इन पास्ट ऑफ वेरिएबल नेम। जैसे ये आपको दोस्तों एरर दिखाएगा, इधर दे सकते हो सिंटैक्स एरर और टोकन ऑन डिलीटेड दिस डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल। Why? सिंटैक्स एरर और टोकन ऑन डिलीटेड दिस टोकन। सो ये नहीं किया जा सकता है, शेयर कर सकते हो y1। तो इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद और एक रूल है दोस्तों, शुड नॉट बी ए कीवर्ड, प्रीडिफाइंड कीवर्ड। ओके, तो जैसे आप वेरिएबल का नेम न्यू नहीं दे सकते हो। ओके, वेरिएबल का नेम आप बाइट नहीं दे सकते हो। ओके, और वेरिएबल का नेम वॉइड नहीं दे सकते हो। ओके, और एक रूल है नो लिमिट लेंथ ऑफ वेरिएबल। ओके, तो आपको दोस्तों वेरिएबल डिक्लेयर करके जितना है लेंथ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगला रूल्स है कि फॉलो कैमल केस। तो कैमल केस क्या आता है, जैसे आप डिक्लेयर करोगे कुछ वेरिएबल, जैसे एज, जैसे फोन नंबर, फोन नंबर। जैसे कैमल केस क्या बोलता है, पूरा जो वर्ड है, वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लोअर केस होना चाहिए। जैसे आप वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करोगे, तो यही है कैमल केस का रूल। तो ऐसे ही दोस्तों आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसे ऐसे रूल्स कुछ फॉलो करना पड़ता है। और वेरिएबल का अलग अलग टाइप है, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो आने वाला है डेटा टाइप के बारे में, तो फुल डेटा टाइप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, टाइप ऑफ डेटा टाइप एंड यूजेस, लेटर्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है, सब वगैरह आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।